गुड मॉर्निंग पिला माने एंड जय जगन्नाथ। तुम मानकर 10th क्लास परीक्षा समस्तंकर सर तुमे माने भाबुथिबो किए कौन करिवो, किए कोठी पढ़िबो, किए आर्ट्स पढ़िबो, किए साइंस पढ़िबो, किए कॉमर्स पढ़िबो। तमे जो लाइन रे पढ़िबार अछि से लाइन रे पढ़। तमे जोटा इच्छा तमर जदि आर्ट्स पढ़िबार इच्छा अछि आर्ट्स पढ़, जदि कॉमर्स पढ़िबार अछि कॉमर्स पढ़, नले साइंस पढ़। जो माने साइंस पढ़िबे सेमानको फास्ट रु मुंडरे भरी दिया जीव जे साइंस टा कष्ट सब्जेक्ट। तो साइंस 11 12 साइंस बहुत कष्ट बोली मुंडरे भर दिया जीव। तेणु सेमिति किछि नाही। तुमे जदि भलरे पढ़िबो ताले बहुत भल मार्क रखिबो। 10th आउ 12th बहुत ह्यूज डिफरेंस। 10th रे तुमे जहां भी परसेंटेज रखिलो तार 12th रे किछि मायना रखेनी। पिला 10th रे 60 रखिबे 12th रे अधिक परसेंटेज रखि परचंती किंबा 10th रे 80 90 रखिबे 12th रे फेल हेई परचंती। तेणु तम जेतिके सब्जेक्ट तमे साइंस रे पढ़िबो ता भितरु तम मुंडरे भरि दिया जीवो जे फिजिक्स ता सबुठु कष्ट सब्जेक्ट। किंतु एक्चुअली फिजिक्स ता बिल्कुल ही कष्ट नुई। फिजिक्स ता बहुत सहज सब्जेक्ट। तमे माने जदि ठीक से पढ़िबो फिजिक्स ता को बहुत भल से करि परिबो। तमे पेरेंट्स माने तुमको कहि देबे तमे एठी कोचिंग जीवो, एई इंस्टीट्यूट को जीवो, सेई इंस्टीट्यूट को जीवो फिजिक्स पढ़िबा पई। तो बारंबार तमे बुली बुली लास्ट को देखिबो जे फिजिक्स से तुम किछि पढ़ी नथिबो। तेणु जो माने बेसिकली सीएचएससी सीबीएसई रे पढुचंती सेमानकर एक्सप्लेनेशन सेमानकर कांसेप्ट क्लैरिटी रहुनी। तो सेमाने दुई तीनटा ट्यूशन दुई तीनटा कोचिंग सेंटर चेंज करूचंती। गार्डियन माने ह्यूज अमाउंट रो पैसा खर्च करूचंती। सेति पई गार्डियन मान को टेंशन रहउची। तो सेति पई कि मु तमानक पई कि यूट्यूब रो वीडियो नै आछि। तमे जदी पूरा फ्री तमे जदी मोर सब वीडियो गोटी गोटी देखिबो मूलरु शेष पर्यंत ताले तमर किछि भी डाउट रहिबनी। कोठी के भी कोचिंग जीवा दरकार नै, कोठी पैसा खर्च करिवा दरकार नै। तेणु मु भाबुची तम माने मोर वीडियो को देखिबो, लाइक एवं सब्सक्राइब करिवो। तो मोर वीडियो जो चैनल होची मोर यूट्यूब चैनल होची पीएन फिजिक्स प्रदीप नंद एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर आउ एटा कांटेक्ट। सब सीएचएससी सीबीएसई सब पिला देखि परिबे जो पिला माने ओडिया बुझुथिबे। मोर एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली ओडिया रे रहिबो। ओके सो तेणु करी आज स्टार्ट करिबा हमें फिजिक्स रा टिके हाफ एन आवर पई हमें फिजिक्स पढ़िबा। ठीक अछि। तो मु भाबुची तम मानको भल लागिवो समस्तंको। जदि भल लागिवो ताले सब्सक्राइब करिवो मो चैनल को। जदि भी किछि डाउट रहउची तम मानकर तमे व्हाट्सएप नंबर रे मते डाउट पचारि परिवो। जदि भी इमीडिएट मु डाउट क्लियर न कलिबा रिप्लाई देई न पारली ताले डेफिनेटली मु देखि कि रिप्लाई देबी। तो आसा एबे स्टार्ट करिबा। तो जो तम मुंडरे भरी रहिची फिजिक्स का डिफिकल्ट सेटा को आग मुंडरो हटेया को पड़िबो। फिजिक्स का ताहाले जाई कि तमे बहुत भलो फिजिक्स रे करि परिबो। तो सेति पई कि आमे स्टार्टिंग रु आज अल्प 30 टू 40 मिनिट्स वीडियो रहिबो आज। तो सेति पई आमे स्टार्ट करिबा व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स कोन, व्हाट इज फिजिक्स। तो मु बहुत टीचर पचारुथिबे फिजिक्स कोन तुमे तार डेफिनेशन घोसी कि फिजिक्स इज द नेचुरल फेनोमेना ने नेचुरल साइंस एंड घोसी घासी कि तार डेफिनेशन दउथिबो। कि फिजिक्स कोन एक्चुअली तम मु एतिके कहबी तम डे टू डे लाइफ रे तम दिन सकाळु राति पर्यंत जहा घटुची सेइटा ही फिजिक्स। सकाळु राति पर्यंत जहा घटुची सेइटा ही फिजिक्स। ओके सो कोन सकाळु राति पर्यंत घटुची। तो तमे जेतबेले उठुच सकाळु उठुच सकाळु जेतबेले उठुच तम उठी पारुन तमे अलार्म बजेई कि उठुच। तो अलार्म बजौच माने साउंड हेलार उठुच। जेतबेले साउंड होउची से साउंड होउची कोन कोडी इंपोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स रो। सकाळु उठिया को तमर कोन दरकार साउंड दरकार। तापरे जेतबेले तमे उठुच तमे उठी कि वॉकिंग करिया को जीवो कि मॉर्निंग वॉक करिया को जाउच। तो मॉर्निंग वॉक करिया को गला बेले तमे रनिंग करूच मूवमेंट होउची तमर दैट इज आल्सो ए फिजिक्स। मोशन दैट इज ए मोशन यू आर गोइंग फॉर मोशन। ओके सो मोशन मूविंग करूच मोशन करूच। तो थर्ड जेतबेले तमे मूविंग करूच जदि तमे पार्क रे मूविंग करूच गोटे बानाना पिल्स पड़ीची गोटे कदली चोपाडे पड़ीची। तो बानाना पिल्स जेतबेले पड़ीची तमे पड़ी जाउच काहे पड़ी जाउच
तो खाली दौड़िले पड़ुन जदि गोटे बानाना पिल्स पड़ी ताले तुम से पड़ जाऊच कहीं पड़ जाऊच कारण तुमर फ्रिक्शन बानाना पिल जो आसूची तुम फ्रिक्शन कमी जाऊँगी तो से तुम पड़ जाऊच बुझीपार मु कौन कहली तो बानाना पिल फ्रिक्शन पड़ जाऊच तुम मॉर्निंग वॉक करके आसुच फैन लगौच फैन लगे कि निजे झाड़ सुखौच फैन जो लगौच सेटा कौन इलेक्ट्रिसिटी सेटा कौन ना इलेक्ट्रिसिटी सेटा कौन इलेक्ट्रिसिटी एबे फैन लगे कि जतबेले देह सुखेला सेटा कौन पे फैन टा बुलिला ना इलेक्ट्रिसिटी जो बुलिला तापरे जतबेले जाउच तमे हाँ जतबेले तमे ऑफिस जाउच ओके ऑफिस जाउच तमे जतबेले डोर ओपन करूच कौन लगेले डोर ओपन होउची फोर्स लगेले डोर ओपन होउची फोर्स लगेले डोर ओपन होउची तबेले ऑफिस रे तमे चा मगौच पियन को चा टिके आनि दे चा केमिति होउची चा केमिति तयारी होउची जदि आमर पानी गरम न होता ताले कोन चा तयारी हे पारंदा तो यदि पानी गरम न होता चा तयारी हे पारंदानी सेटा कोन पे चा तयारी होउची ना हीट जोगु चा तयारी होउची कहा जोगु चा तयारी होउची ना हीट जोगु चा तयारी होउची तापरे जेतबेले तमे देखुच जे तमे जेतबेले गोटे जिंस ऊपर तळु को पडुची गोटे बेलून टे ऊपर तळु को खसुची कि गोटे बॉल टे ऊपर तळु को पडुची काहे की पडुची बॉलटा तो ऊपर को पळांता मु गोटे बॉल को तो फुटबॉल टा मारी देली बॉलटा तो ऊपर को पळांता तळु को कोन पई पळे आसुची ना कोन पई आसुची ना ग्रेविटेशन पई आसुची कोन पई आसुची ग्रेविटेशन पई आसुची बुझिएला मु कोन कहली ग्रेविटेशन पई आसुची तो एमती जहा डे टू डे लाइफ रे हमें पढुचे हमें खाद्य खाउचे सो वी आर ईटिंग फूड ठीक अछि वी आर ईटिंग फूड फूड ईट कले हमको कोन मिलुची एनर्जी सो इफ वी आर ईटिंग फूड देन वी आर गेटिंग एनर्जी मिलुची तो एनर्जी मिलिले हमें कोन करूछु वी आर डूइंग वर्क डन सो वी आर डूइंग वर्क ओके सो एमती जदि डे टू डे लाइफ रे प्रतिदिन जहा देखिबा सेटा होची फिजिक्स हमें एई चैप्टर सब हमें 11th रे पढिबा ओके आउ कोन अछि आउ कोन कहली तमे एई जगह रे ठिया आइछ तमे एई जगह रे ठिया आइछ ठीक अछि एई जगह रे ठिया आइछ एई पॉइंट ए रे तमे ठिया आइछ तमे जिबा को चाहिबो पॉइंट सी को जिबा को चाहिबो तो तमे एई आउ गोटे लोक ठिया आइछि ताको पचारल अरे भाई मु सी पाखरे केमती पहुंचीबी अरे भाई मु सी पाखरे केमती पहुंचीबी सी कहला तमे 5 किलोमीटर पळा तो तमे ए रो स्टार्ट कल 5 किलोमीटर गल किंतु तमे जाई बी रे पहुंची गल सी रे पहुंची पाइलो नहीं काहे के सी रे पहुंची पाइलो नहीं ना कारण से जो लोक जनक जो ठिया आइतिला से तुमको डायरेक्शन कहलानी से खाली कहदेला 5 किलोमीटर पळा तमे 5 किलोमीटर पळेलो को दिगरे जिबा को डायरेक्शन रे जिबा से कहला नाही सेथि पई कि तमर कोन प्रॉब्लम हैला तमे ए रु गल बी रे पहुंची गल बुझी पाइलो मु कोन कहली किंतु तमर दरकार थिला ए रु सी से जदी कहि थांता ए पॉइंट रु 60 डिग्री ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ ताहाले जाई कि तमे पहुंचीबो सी रे ताहाले जाई कि तमे सी रे पहुंची थांता किंतु से डायरेक्शन कहलानी ता माने मो कहला कथा एमिति केते गुडा क्वांटिटी अछि जो थिरे कि हमको डायरेक्शन कहबा को पड़िबो एमिति केते गुडा क्वांटिटी अछि जो थिरे डायरेक्शन भी दरकार नै तो सेति पई कि आउ गोटे मु पढिली कोन हैला एटा पढिबी वेक्टर्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये गोटे चैप्टर हबो 11th रो फिजिक्स रो तो एति कि जो मु लेखिली हम डे टू सकाळु संध्या पर्यंत एई जो घटी गला एति कि जिंस जो सकाळु संध्या पर्यंत मोर घटी गला सेटा डे टू डे लाइफ रे घटिला तो एई जो जिंस एति कि चैप्टर मु पढिली एटा सब मु पढिबी 11th रे सब पढिबी प्लस 2 फर्स्ट ईयर किंबा 11th रे पढिबी बुझी पाइलो ताहाले फिजिक्स कोन व्हाट इज फिजिक्स फिजिक्स होची हमर डे टू डे लाइफ रे जहा घटुची दैट इज फिजिक्स ओके सो फिजिक्स रा एते कष्ट जिंस किछि नै तो प्रतिदिन मो जीवन रे प्रति मुहूर्त रे जो जिंस गुडा घटुची से गुडा ही फिजिक्स बुझियला तो एबे व्हाट इज फिजिक्स रा कोन मो डेफिनेशन लिखिबी
सो नेचर रे जहा घटुची ओके सो फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स रा डेफिनेशन कोन लिखुची देखो लेख फास्ट स्टार्ट करो व्हाट इज फिजिक्स physics is the branch of science physics is the branch of science which deals with nature which deals with nature which deals with nature and natural phenomena जहाँ आम चारिपटे नेचर रे घटुछि सेटा हला फिजिक्स ठीक अछि तो एडु स्टार्ट हला हमर पाठ 11th रो फर्स्ट ईयर रो व्हाट इज फिजिक्स ताहाले तो फिजिक्स विषय मु कहली जहाँ हम डे टू डे लाइफ रे घटुछि सेटा हला फिजिक्स ताहाले ए जो फिजिक्स रे आमे 11th रे कौन कौन पढ़िबा 11th रे दीटा बुक्स रहिबो बुक 1 एंड बुक 2 ओके सो 11th रे हमें बुक 1 रे की चैप्टर पढ़िबा 11th रे फर्स्ट हमें पढ़िबा यूनिट्स डायमेंशंस एंड मेजरमेंट ये रहबा हमर चैप्टर 1 मेजरमेंट तापरे आको मु डिवाइड कर देबी स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऑल्दो एडा 4th चैप्टर एनसीईआरटी रे अछि बट चैप्टर 1 परे हम एडा पढिबा स्केलर्स एंड वेक्टर्स ओके देन नंबर 3 आसीबो रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन ओके मोशन इन 2D काइनेमेटिक्स आको कहा जाए ओके सो नंबर 3 देन चैप्टर 4 रे हमें पढ़िबा डायनामिक्स और लॉज ऑफ मोशन ताको एनएलएम शॉर्ट फॉर्म रे कहा जाए ताको हमें देखिबा कोन एनएलएम कहा जाए सो लॉज ऑफ मोशन देन नेक्स्ट चैप्टर रहिबो मोर फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन पर रहिबो फ्रिक्शन देन नेक्स्ट चैप्टर रहिबो मोर कोन फ्रिक्शन पर ग्रेविटेशन देन आउरे कोन रहिबो ग्रेविटेशन पर वर्क एनर्जी एंड पावर ओके सो एते के चैप्टर मु 11th रे पढिबी काइनेमेटिक्स रेस्ट ऑफ मोशन डायनामिक्स फ्रिक्शन ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी एंड पावर इन कंपैरिजन टू सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ता इजी तो एते की मु पढिबी मोर बुक 1 रे ओके एते की चैप्टर देन बुक 2 रे मु कोन पढिबी बुक 2 रे पढिबी मु देखो मु कोन लिखुची बुक 2 रे मु पढिबी oscillations and waves जोटा कि मु कहली साउंड वेव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स ओके नंबर 2 oscillations and waves then heat okay then thermodynamics then kinetic theory of gas this is 2 chapters oscillations 1 chapter waves 1 chapter heat is a big chapter then thermodynamics is a big chapter then kinetic theory of gas these are the major portion आमे पढ़िबा हां fluid motion so fluid motion हमें बुक 1 में पढ़ी दवा किछि असुविधा नहीं fluid motion elasticity विषय भी पढ़ी दवा so fluid motion then center of mass and rotational motion all this center of mass and rotational motion
So this will comes under the book 1, rotational motion. Then only in book 2 we will have oscillations, waves, heat, thermodynamics, then kinetic theory of gases. So these chapters we will read in your book 2. Regarding book तमे भाबिबो कोन कोन मते बही पढिबार अछि ओनली एबे पई तमे जेतु 10th क्लास पास करिछ मु किछि भी बही तुमको प्रेस्क्राइब करिवनी तमे खाली वीडियो देखिबो आ एनसीईआरटी तो को बही पढिबो से सीबीएसई होंतु कि सीएचएसई होंतु कि आईसीएसई होंतु कि नीट होंतु जेई होंतु एनसीईआरटी फर्स्ट होची एनसीईआरटी बुक 1 and 2 for first year, then एनसीईआरटी बुक 1 and 2 for second year. बुझिएला तमरा एतिकी बुझ पाइला पिला माने ना काहे डाउट अछि एतिकी रे. सो बुक जदि तार डाउट्स होइबो मते कमेंट्स करिवो किंबा यू विल आस्क मी इन द व्हाट्सएप. अच्छा पिला माने आजि हमें फर्स्ट चैप्टर टिके बेसिक जिंस पढिबा तापर हमें धीरे धीरे गोटे गोटे वीडियो करके सब पढि दी बा किछि भी डाउट्स रहइबनी नीट जेई सब कवर करिबा. तो यू शुड फॉलो मी एंड तमर काम होला तमे खाता पेन धर के बसिबो जहाँ मु कहूची बा जहाँ पढ़ौची सेतिकी लेखिबो आ तो मन रखियो चेष्टा करिवो. ठीक अछि. सो चैप्टर 1 आज स्टार्ट करिबा. चैप्टर 1 क्लास 11 और प्लस 2 फर्स्ट ईयर क्लास 11. ओके. सो फर्स्ट चैप्टर हेडिंग करिवो quantities, units, dimension and measurement. Okay. 4 ରୁ 5ଟି क्लास रे पूरा सबु चैप्टर 1 सरीबो 4टी ରୁ 5टी क्लास किंतु तमे देखिबो कोचिंग गले कि इंस्टीट्यूट गले. ठीक अछि. मु 3 क्लास से छाड़ी चेष्टा करिवि 3 आवर्स भीतर कि तमरो आ को जगह को गले तम मे बी 6 7 के 8 क्लास की 10 क्लास नहीं जिवे जोडा कि तमर टाइम वेस्टेज होबो. ठीक अछि. पूरा सब कवर हबो. क्वांटिटीज कवर हबो, यूनिट्स कवर हबो, डायमेंशंस कवर हबो एंड मेजरमेंट कवर हबो 3 ରୁ 4 क्लास भीतर मैक्सिमम. तो एबे स्टार्ट करिबा. क्वांटिटीज कोन हेडिंग करो क्वांटिटीज राइट. व्हाट इज ए क्वांटिटी देन. तो ये मार्कर को मु कैरेक्टरिस्टिक्स करिबा पई मु कहली एटा गोटे व्हाइट कलर मार्कर जार लेंथ होची 10 सेंटीमीटर. ओके. तो एनी ऑब्जेक्ट जे कोन अछि गोटे ऑब्जेक्ट एटा मु देखौची एटा गोटे पेंसिल बॉक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हे परिबो आर शेप आर साइज कहले आर मास. तो एटा सब कार कैरेक्टरिस्टिक्स हे परिबो. तो क्वांटिटीज are the characteristics of an object. Okay. The गोटे ऑब्जेक्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन एटा केमिति देखा होउची आर लेंथ केते आर ब्रेड्थ केते आर हाइट केते आर मास केते बुझी पारुचो. तो quantities are the characteristics of an object. Okay. So it is the characteristics of an object. It is the characteristics of an object. So of an object. It is the characteristics of an object. ए ऑब्जेक्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कहले सेटा क्वांटिटी. अच्छा ए ऑब्जेक्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स देला जदी मोर क्वांटिटी ताहले मु कहूची देखो फिजिकल क्वांटिटी कोन क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल quantities. So it is the characteristics of an object. It is the characteristics of an object. Characteristics of an object which is measurable. माने कोन मापी पारिबी जे quantities. It is the characteristics of an object. So it is physical quantities. It is the characteristics of an object which can be measurable. जहाँ को
मु मापी पारिबी माने मु कहली ए जो मार्कर रो मोर लेंथ 12 सेंटीमीटर ताऊ मापी पारिबी किंतु मु जदी कहिबी मार्कर रो कलर होची व्हाइट मु ताको मापी पारिबी नाही मेजर करि पारिबिनी केते व्हाइट सेडा मु मेजर करि पारिबिनी सेडा होची मोर क्वांटिटीज बट it is not physical quantities. Okay, so कौन example physical quantities example कौन so example होची mass मु कहि परिबी ए मार्कर रा मास होची 10 ग्राम लेंथ मास लेंथ आउ टाइम ठीक अछि वेलोसिटी डिस्टेंस ठीक अच्छी वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सीलरेशन ये सब कौन आमे जानिबा तमे आगु पढिछ 9th क्लास रे वेलोसिटी एक्सीलरेशन फोर्स एक्सेट्रा सो ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज जहां को कि मु मापी पारिबी सो देयर आर अदर क्वांटिटीज व्हिच are not regarded as physical quantities because they are not measurable so we can write down that there are some other quantities which are not measurable for example if I will tell friendship मु कहबी तमे दी जण पिला सांग अछ केते सांग सेटा कोन मापी परिबो 1 kg 2 kg 4 kg सांग बेली मापी परिबो फ्रेंडशिप बेली नो यू कैन नॉट मेजर इट सो सच एज देन इमोशन एंगर जेंती कहली कलर केते व्हाइट केते ब्लैक सेटा मापी परिबोनी तमे सो एक्सेट्रा एंगर बापा रागिले बापा केते रागिले 5 सेंटीमीटर रागिले कि 10 सेंटीमीटर रागिले एटा तो तमे कहि परिबोनी तेनु एई क्वांटिटी गुडा मोर फिजिकल क्वांटिटी अंडर रे जीवनी देयर आर सम अदर क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट मेजरेबल these quantities are not physical quantities एई क्वांटिटी गुडा फिजिकल क्वांटिटीज नुहे तो यही जो क्वांटिटी गुडा को मु पढ़िबी नाही सो वी विल नॉट रीड दीज क्वांटिटीज वी विल रीड ओनली फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स वी विल रीड फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स वी विल रीड व्हिच क्वांटिटीज वी विल रीड ओनली फिजिकल क्वांटिटीज बुझी होची तो मानकर पूरा क्लियर कांसेप्ट क्लियर होची तो मु ताले को क्वांटिटी फिजिक्स पढ़िबे खाली फिजिकल क्वांटिटी पढ़िबे क्लियर हैला फिजिकल क्वांटिटी कहले जो क्वांटिटी गुडा मु कोन करि परिबी मेजर करि परिबी जो क्वांटिटी गुडा को मु मेजर करि परिबी जो क्वांटिटी गुडा को मेजर करि परिबिनी ताको मु फिजिक्स रे पढ़िबी नाही तो मु बाबू जे पूरा क्लियर हे गला पॉज करी तमे लिखि परिबो ओके सो फर्स्ट ताको इरेज करो इरेज करूचे बे पॉज करके लेखा फर्स्ट देन अच्छा आमे सिस्टमैटिकली जीवा गोटे चैप्टर परे तार प्रॉब्लम सॉल्व करिवा प्रॉब्लम जेई नीट लेवल रे भी सॉल्व करिवा तो आमे कम हार्डर रो जीवा हार्डर प्रॉब्लम जेई नीट लेवल प्रॉब्लम फर्स्ट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करिवा तापर जीवा जेई नीट लेवल प्रॉब्लम अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज कला physical quantities are of two types so we can write down physical quantities are of two types number one first है fundamental quantity quantities सेकेंड रहेला derived quantities फर्स्ट हमें देखिबा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन
तो फास्ट देख फास्ट लेखनी फास्ट बुझ तापर मु कौन कहबी लिखिब फास्ट हेडिंग कर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सपोज फंडामेंटल क्वांटिटीज तमे पढ़ी स्कूल रे डेंसिटी बा सांद्रता ओडिया रे जाकू कहंती डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी गोटे क्वांटिटी जहाँ को मुझे लिखिपारि मास बाय वॉल्यूम बुझीगला। तो वॉल्यूम को जदि गोटे क्यूब अच्छी सपोज गोटे क्यूब अच्छी तार वॉल्यूम केते हबो आ सबुरा लेंथ होची एल बा सबुरा लेंथ होची एल ताले कोन हबो वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट हबो वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो मास बाय वॉल्यूम कोन हे जीवो मास लिखि पारिबी मास बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट लेंथ breadth into height. So again so this can be written as mass breadth और height भी मोर length अंडर रे चलची तो मु ताको लिखि परिबी length रो क्यूब। जदि समस्तंकर length समान ताको लिखि परिबी length रो क्यूब। ता माने फर्स्ट बुझा तापर लिखिबो तो डेंसिटी ता कोन लिखिबो मु कहबी डेंसिटी ता मास बाय लेंथ रो क्यूब बुझी होची मास बाय लेंथ रो क्यूब। डेंसिटी को मु मास बाय वॉल्यूम टर्म रे लिखि परिबी मास को मु भांगी परिबी नाही जो मास सही मास रहइबो किंतु वॉल्यूम को मु भांगी परिबी वॉल्यूम को कोन करि परिबी लेंथ रो क्यूब रे लिखि परिबी पुणी जतबेले भांगीबी लेंथ को आ भांगी परिबिनी। ता माने मोर कहवा कथा डेंसिटी टा को मास बाय वॉल्यूम फॉर्म रे लिखि परिबी किबा मास बाय लेंथ क्यूब फॉर्म रे लिखि परिबी किंतु मास को मु को फॉर्म रे लिखिबी मास को किछि फॉर्म नाही मास को आ भांगी परिबिनी लेंथ को फॉर्म रे लिखिबी लेंथ को किछि भांगी परिबिनी। एमती किछिटा क्वांटिटी अछि जहा को मु अदर क्वांटिटी टर्म रे लिखि परिबी नाही किछिटा क्वांटिटी को लिखि परिबी जेंति कि कहली डेंसिटी डेंसिटी को लिखि परिबी मास वॉल्यूम फॉर्म रे वॉल्यूम को लिखि परिबी लेंथ रो क्यूब फॉर्म रे किंतु मास लेंथ को मु को फॉर्म रे लिखि परिबी नाही बुझियला क्लियर पूरा। तो एबे कहबी फंडामेंटल क्वांटिटी कोन ना जो क्वांटिटी को मु अदर क्वांटिटी फॉर्म रे लिखि परिबी नाही ताको कहबी फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके जो क्वांटिटी गुडा को मु अदर क्वांटिटी फॉर्म रे लिखि परिबी नाही ताको कहबी मु फंडामेंटल क्वांटिटी। एटी मास आउ लेंथ हला मोर फंडामेंटल क्वांटिटी किंतु वॉल्यूम आउ डेंसिटी हला मोर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एटा लेखनी फास्ट हमें लिखिबा डेफिनेशन तापर मु लिखिबी बुझी पाइले तो पूरा लिखिबा। हां those quantities or the quantity which cannot be the quantities which cannot be expressed in terms of other quantities which cannot be expressed in terms of other quantities are called fundamental quantities are called fundamental quantities बुझियला cannot be expressed in terms of other quantities are called fundamental quantities. Example only केतेटा fundamental quantities थिबो बेली भाबुछ फिजिक्स रे only 7 fundamental quantities केवल 7टा fundamental quantity physics रे अछि कोन से 7टा fundamental quantity so only 7 fundamental quantities are there only 7 fundamental quantities are there in physics quantities are there in physics only 7 fundamental quantities are there in physics only 7 so मु लिखुची लेख कौन 7 fundamental quantities first है mass number 2 है length
नंबर 3 है टाइम, नंबर 4 है टेम्परेचर, नंबर 5 है इलेक्ट्रिक करेंट, नंबर 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, नंबर 7 है एटी नंबर 7 लिखुची, नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बुझीला। तो ये सातटा केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छी फिजिक्स रे। आ छड़ा आउ जेते क्वांटिटीज रहिला सेगुडा सबु हेले मोर डिराइव्ड क्वांटिटीज। आ छड़ा जेते क्वांटिटीज रहिला सबु हेले कोन डिराइव्ड क्वांटिटीज। गोटे मिनिट माइक टा ए खसी जाई छु। आ छड़ा जेते रहउची सबु गुडा हेले मोर डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास तो तुम जानिछ, जेमती कहली एई मार्कर रो मास होची 10 ग्राम। सो लेंथ भी जानिछ, एई मार्कर रो लेंथ होची 15 सेंटीमीटर। टाइम जानिछ, ता माने एई जो क्वांटिटी हैला आकु मो अदर को क्वांटिटी टर्म रे लिखि परिबी नाही, ओनली फंडामेंटल। सो टेम्परेचर, टेम्परेचर तुम जानिछ आज रूम रे टेम्परेचर होची 20 डिग्री कि 30 डिग्री। सो टेम्परेचर जानल। इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट जानुछ, तुम घर इलेक्ट्रिक बल्ब जळुची तो करेंट फ्लो करे इलेक्ट्रिक बल्ब जळिबो। 12th रे हमें करेंट विषय पढिबा। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी माने लाइट इंटेंसिटी। तुम घरे डिफरेंट टाइप रो बल्ब जळुछ, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी पाउछ। आगुर 100 पावर बल्ब जळुतला तार गोटे इंटेंसिटी अलगा थिला, एबे ट्यूब लाइट जळुची, एलईडी जळुची, समस्तंकर इंटेंसिटी सब अलगा अलगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम स्कूल लेवल पे पढिथिला ताको मोल कुआ जाय। मोल, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एई सातटा आ भितरु आमे फर्स्ट चारिटा केवल पढिबा फर्स्ट ईयर रे, आउ इलेक्ट्रिक करंट एंड सम पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी विल स्टडी इन सेकंड ईयर 12th। गॉट माय पॉइंट? सो ए सातटा हला मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मने रखिबो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आ छड़ा आउ जेते क्वांटिटी रहिला फिजिक्स रे हजार हजार क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी हमें पढिबा, से गुडा होची कोन? से गुडा होची सब डिराइव्ड क्वांटिटीज। एबे मु लिबोची, पॉज करी लिखि दियो, तुम माने पॉज करी लिखि दियो। ओके, सो ताहले डिराइव्ड क्वांटिटी कोन? एई सातटा छड़ा जेते फिजिकल क्वांटिटी रहिला सब को कोन कहबी? डिराइव्ड क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। लिखिबा नंबर 2 रे मोरेला डिराइव्ड क्वांटिटीज, derived quantities, the quantities which are expressed or which can be expressed in terms of other quantities, which can be expressed in terms of other quantities are called derived quantities, ता माने गोटे हला फंडामेंटल आ गोटे एग्जांपल जे कोनोसी क्वांटिटी मु लिखिबी, जेमति कि लिखितली डेंसिटी, density can be expressed in terms of mass by volume, area, then your velocity, acceleration, force, work, energy, etc.
work, energy, etc. So these are the thousands of quantities which we will read. These are called as a derived quantities. तो ये जो derived quantities है केमती एक्सप्रेस करी हम गोटे गोटे डेंसिटी देखै दउची एरिया कोन एरिया इज योर लेंथ इनटू लेंथ सपोज मु कहली डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज केमती रिप्रेजेंट करी हम मास बाय वॉल्यूम सपोज मु कहली वेलोसिटी केमती रिप्रेजेंट करी हम displacement by time or distance by time. So displacement by time. So displacement go to quantity, time fundamental quantity. So acceleration, same the change in velocity by time, force, mass into acceleration. Okay, so all these are derived quantities. Clear? Fundamental quantity and derived quantity. Any doubt? So you can send the doubt in WhatsApp. I will reply to it. Okay. So now some notes I will write down. Some notes. Besides the two fundamental quantities, besides the 7 fundamental quantities, another 2 quantities are there. Which these 2 quantities cannot be expressed in terms of other quantities. But still, now they are not regarded as a fundamental quantities. What are these 2 quantities? There are other two quantities such as other 2 quantities such as plane angle and solid angle. Plane angle and solid angle. These 2 quantities, plane angle and solid angle. These 2 quantities cannot be expressed in terms of other quantity. ए दिटा को मु other quantity term रे express करि परिबि नाही, किंतु ताको फंडामेंटल भी कहिबि नाही. ठीक अछि? ताले फंडामेंटल कहले केवल 7टा. ए दीटा एक्स्ट्रा क्वांटिटी मु रिप्रेजेंट हेई पारे फंडामेंटल रे, बट आज पर्यंत रिप्रेजेंट हेई नाही. तो प्लेन एंगल कोन? प्लेन एंगल तुम जानिथिबो, एडाला थीटा प्लेन एंगल. सो एडाला प्लेन एंगल. ओके, सो एडाला प्लेन एंगल मोर. किंतु सॉलिड एंगल मु कहिबी कोन. सॉलिड एंगल. ओके, दिस इज सॉलिड एंगल. ओके, कोन जो आइसक्रीम कोन खाउछ, तमे आइसक्रीम कोन खाउछ, छोट कोन हेले तादेर कम आइसक्रीम पसुची, बड़ कोन हेले अधिक आइसक्रीम पसुची. मो हाथ को देखो, एटा होची सॉलिड एंगल, माने एंगल इन 3D. एटा होची एंगल इन 2D. गोटे प्लेन गोटे बोर्ड ऊपर तमे एंगल टे ड्रा कर दबो, एटा हो प्लेन एंगल. तो आर यूनिट कोन? आर यूनिट हला प्लेन एंगल. एटा हला मोर प्लेन एंगल. ओके, सो एटा हला कोन? प्लेन एंगल. आर यूनिट हला कोन? रेडियन. यूनिट होची रेडियन. एसआई यूनिट मु डिग्री रे नउनी. एटा हला मोर कोन? सॉलिड एंगल. कोन सॉलिड एंगल 3D रे सॉलिड एंगल. आर यूनिट कोन? सॉलिड एंगल रो यूनिट हला मोर सॉलिड एंगल स्टेरिडियन. एसटी रेडियन. ओके, सॉलिड एंगल यूनिट कोन? आर स्टेरिडियन. यूनिट होची स्टेरिडियन, एसटी रेडियन. सो तमे मने रखिबो दीटा क्वांटिटीज. देयर आर अदर 2 क्वांटिटीज such as plane angle and solid angle cannot be expressed. So cannot be expressed in terms of other quantities, but still they are not regarded as, but still they are not regarded as fundamental quantities. Regarded as fundamental quantities. Okay, बुझिएला? तो एतिक तमे पॉज करी आगे लिखि दियो, तापरे मु जीबी नेक्स्ट सेक्शन को.
सो क्वांटिटीज विषय एतिकी तो नेक्स्ट सेक्शन को जी।